Dear students, I have given you some tags in the last class, that is IUPAC naming of the elements from atomic number 110 to 130. Thank you all for doing the tags, but 1 to 2 students, they have done wrong with the atomic number 130. 130. এই 130 atomic number ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତିକ ପିଲା ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା କରିଛ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 130 ପାଇଁ 1 ପାଇଁ ଲେଖିବା ଅନ୍, 3 ପାଇଁ ଲେଖିବା ଟ୍ରାଏ, 0 ପାଇଁ ଲେଖିବା ନିଲ୍, ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କରିବା IUM. IUM. Then what is the name of this element with atomic number 130? That is on trinillium. On trinillium. Then what will be the symbolic representation for this? That is 1 U, 3 T and 0 that is N. UTN. किंतु जने दिन पिला से T जगह रे से जो 1 2 0 माने 2 2 चलतिरा तो तने बाय लेखि देचंदी on biennium लिखि देछन कि एक्चुअली होची on trinillium UBN लिखिछ सेटे एक्चुअली सेटा होची UTN. So thank you all for doing the tags. So today we will start the next part of this portion, that is element. Their types, we have divided the element into 3 kinds, that is metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metals and that is metalloid. So this type of classification that is done on the basis of that is electrical conductivity. Then how to define that metal? So metal, these are the substances that are the ability to conduct electricity. Metal that are the ability to conduct electricity. Non-metal that do not have the ability to conduct electricity. Metalloids, under certain condition they have the ability to conduct electricity. The examples of this kind are, that is gold, silver, platinum, or you can take that is AgAuPt, Cu. All these are the examples of this metal that are the ability to conduct electricity. Non-metal that has no ability to conduct electricity, P4, S8, O2, N2, etc. All these are the non-metals that has no ability to conduct electricity. But one question there, the non-metal, give the example of that non-metal which are the ability to conduct electricity. In the last class we have discussed, that is graphite. That is graphite. Non-metal that conduct electricity, that is graphite. And the rest of all, the non-metal that has no ability to conduct electricity. Then metalloid, that is silicon, germanium, antimony, etc. These are the examples of that metalloids. They under certain condition they have the ability to conduct electricity. So non-metals that has the conduct electricity, metals that conduct electricity, then non-metals do not conduct electricity except that is graphite. Except that graphite. And the metalloids under certain conditions they have the ability under certain condition conduct electricity.
So this is the classification of elements. Elements that has been divided into three kinds: metals that have the ability to conduct electricity, non-metal that has no ability to conduct electricity except that graphite, and metalloids. Under certain conditions, they have the ability to conduct electricity. And we have cited these examples here. Then what are the other properties of these metals? The metals, other that is regarding the properties of that metal. Metals, these are sonorous. Sonorous means that is sound producing. मने करा जाऊ गोटे मेटाल आम हाथ खसी पड़ला तले पड़ला परे झण जो साउंड हो से साउंड प्रोड्यूसिंग देयर आर साउंड प्रोड्यूसिंग दैट इज सोनरस साउंड प्रोड्यूसिंग दे आर malleable, ductile, that is luster property. They will show this luster property, high density, melting point, etc. So the exceptions are that is mercury. That is the liquid mercury. That is the example of that liquid metal. That is the example of that liquid metal. Cesium, that is metal, but that is having low melting point. Even if that can vaporize, if you keep this in your hand. यदि हाथ रे हम केवल धरिबा दले दरकार पले से vaporize जेबो काना हमर बॉडी टेम्परेचर प्राय रहउची 37 डिग्री सेंटीग्रेड तेनो सेही टेम्परेचर से एवापोरेट हे जिवो तेनो मेल्ट हे जिवो एवापोरेट होबो मेल्ट होबो तेनो वर्तमान देखिबा जे एलिमेंट जो डिवाइड करचे मेटल हम बेसिकली कहले कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल साइड करचे एमाने भितरो बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज योर silver that has the ability to conduct electricity to greater extent as compared to any other metals. जितने metal अछि सब highest electrical conductivity that is shown by that is silver. रूपा जोड़ा हम कहूचे तेणु sonorous means sound producing, malleable, beaten into seeds. बड़े बड़े नले तो पूरा पतला पात तैयारी करि परिबा तापरे डक्टाइल drawn into wires हम जानि छे जदि हम 1 ग्राम रो जदि हम गोल्ड नबा 1 ग्राम गोल्ड that can drawn into a wire of that is 2 kilometers माने ग्राम टे जदि हम गोल्ड नउचे 2 किलोमीटर पर्यंत हम तार टाणी परिबा ए तो अनुमान करो जे एमानंकर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जोड़ा होचे नमनीयता तन्यता को जे डक्टाइल से प्रॉपर्टी केते अधिक हेतु अनुमान करो that can be drawn into wires that have the ability to serve that is luster property that is shining surface that has the ability to show that is shining surface जब लाइट ता फ्रेशली कट मने करा जो गोटे लुहा पिंड टाइम भांगी देइछे बा ता नै कि हमें गोटे पत्थर ऊपर का ऊपर नै घसला परे सेटा डैजलिंग करूची से जो डैजलिंग करिया प्रॉपर्टी को हम कहूचे दैट इज लस्टर प्रॉपर्टी औजल्य नमनीयता तन्यता औजल्यता ये देखाए सोनरस दैट इज साउंड प्रोड्यूसिंग and they have the ability to conduct heat and electricity. They have the ability to conduct heat and electricity. तेणु एमाने ताप एवं इलेक्ट्र सुपरिवाही हाई डेंसिटी सांद्रता तार बहुत अधिक रहबो मेल्टिंग पॉइंट अधिक रहबो एक्सेप्ट दैट सीजियम तारे मर्क्यूरी होची गोटे लिक्विड मेटल कना आउ जेते सब प्राय अछि समस्त होचन कोन मेटल जेते मेटल गुडी को सेमान होचन सॉलिड किंतु सीजियम सॉलिड बट दैट इज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट
and mercury, that is liquid metal. So if we analyze the other properties of that non-metals, ये जहाँ जहाँ property देखौची तार उल्टा property समान देखे, अर्थात sonorous हेबेनी, sound produce करिवेनी, अर्थात malleable की ductility property तान किसी भी रहिबो नहीं. एवं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कथा जब चिंता करिबा केवल ग्राफाइट होची इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिबो जदियो सेटा गोटे नॉन मेटल आ मेटालाइट सर्टेन कंडीशन से माने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करिवे. सो दिस इज रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ दैट एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. So this is all about that is regarding that elements. In the last classes we have given the definition of that element, that is smallest unit of that matter which can take part in chemical reaction, that is purest form of the matter, that is known as element. Purest form of matter, that is element that contain only one kind of atom. And again we have given the symbolic representation of these elements, and this is regarding the classification of the elements. Next we will go for that compound. What is that compound, how that is produced, and what are its properties. So we have to define what is that compound. This is the substance produced by taking different atoms in a definite ratio. So I have to define that compound. जो यौगिक पदार्थ पर जोग हम जोग ये क्या हम चले compound में यौगिक पदार्थ जो define कर कौन, that is the substance produced by taking different kind of atoms in a definite ratio. निर्दिष्ट अनुपात रे विभिन्न प्रकार मौलिक मिसिबे, विभिन्न प्रकार मौलिक मिसे प्रोडक्ट करिवे यौगिक पदार्थ. माने करा जाऊ देखा फॉर एग्जांपल देखिबे हम हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन. हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन जदि एमाने विभिन्न प्रकार मौलिक हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन विभिन्न प्रकार मौलिक. So if they will combine in this ratio, that is 2H2 1H2 if that will combine the ratio of that is 2H2 1H2 then what will be the formula for them? What will be that compound? H2S H2O. If the ratio that is found to be 2:1:4, then the formula will be that is H2SO4. That is your sulfuric acid. It is the formula for that sulfuric acid, that is compound. So that is produced by different kind of atoms in a definite ratio. निर्दिष्ट अनुपात रे माने मिसले जदि ए अनुपात परिवर्ते ए अनुपात जदि हम नेजबा 2:1:3 तले कोन पाइबा हम, that is H2SO3. So first one, that is the example of that sulfuric acid, and second one, that is the formula for that is sulfurous acid. Sulfurous. Same element, we have taken the same element, hydrogen, sulfur and oxygen, but ratios are different. So we have defined compound, substance that is produced by taking different kind of atoms in a definite ratio. If the ratio is this much, then that is sulfuric. If the ratio is this, then that is sulfurous. Similarly, you can take, for example, that is hydrogen and oxygen ratio. If that is your 1:2, that is 2:2, or that is 2:1. 2:2, that is your H2O2, that is hydrogen peroxide. H2O2, that is the formula for that hydrogen peroxide. And 2:1, that is H2O.
that is water molecule. Again you can take that is carbon oxygen ratio. If that is 1:1, then that is your carbon monoxide. 1:1, 1:1, that is carbon monoxide. If that is 1:2, then it will be your carbon dioxide. 1:2, 1:1, 2:1, 2:2, 2:1:3, 2:1:4. So all are the examples of that compounds, and these compounds are produced by taking different kind of atoms in a definite ratio. If the ratios are different, then compounds will be different. Ratios are different, compounds are different. Ratios are different, then compounds are different. So that is the compound, that is the definition for that compound. But what happens after the combination of these elements? ये एलिमेंट गुड़िक मौलिक गुड़िक मिसे यौगिक पदार्थ तैयारी कला परे से मौलिक गुड़िकर कौन घटे? मौलिक गुड़िक सेमानकर निजस्व स्वतंत्रता बजाय रखिबे नाही, हरइबे। अर्थात सेमानकर निजस्व धर्म जहाँ रहिबो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, निजस्व धर्म जो कहूचे सेमान निजस्व धर्म से बजाय रखिबे नाही। दे लूज देयर आइडेंटिटी और दैट प्रॉपर्टी। माने करा जाऊ गोटे जगह निया लगी ताले आम कौन करवा हाइड्रोजन गैस पास करवा। हाइड्रोजन दैट इज हाईली कंबसिबल, अत्यधिक मात्रा रे दहनीय हाइड्रोजन गैस निया लगी हाइड्रोजन गैस पास करवा। हाइड्रोजन गैस पास कले से निया प्रबल मात्रा जली जली माने चलीगले। यदि ऑक्सीजन पास करवा, ऑक्सीजन टा कौन? ऑक्सीजन इज कंबसिबल एंड सपोर्टर ऑफ कंबसन, निजे दहनीय एवं दहन सहायक। कंबसिबल एंड सपोर्टर ऑफ कंबसन, दैट इज योर ऑक्सीजन। तले हाइड्रोजन गैस जल निया लगी, हाइड्रोजन गैस हम पास करचे जोर से जलिबो। ऑक्सीजन गैस पास करवा जोर से जलिबो, किंतु जोड़े निया लगी जदि आम वाटर नहीं ढालिबा, वाटर नहीं ढालिबा, पानी नहीं ढालिबा, ताले कौन हम? निया लिभिजिबो। ताले हाइड्रोजन गैस कंबसिबल, ऑक्सीजन गैस कंबसिबल एंड सपोर्टर ऑफ कंबसन। से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सृष्टि होइतिबा वाटर मॉलिक्यूल से निया को लिभेबारे साहाय्य करिवो। अर्थात दैट एक्सटिंग्विशेस फायर, निया को निर्वापन करियारे लिभेबारे से साहाय्य करिवो। ताले H2O रे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाही कि? वाटर रे H2O जो कहूचे फॉर्मूला से तो हाइड्रोजन अच्छी ऑक्सीजन अच्छी, किंतु हाइड्रोजन ऑक्सीजन थाई कि से निजस्व धर्म रखिबे नाही। ठीक से बड़ी जदि हम देखिबे कार्बन एंड ऑक्सीजन दैट कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:2 टू फॉर्म दैट कार्बन डाइऑक्साइड। मने करा जाऊ गोटे निया लगी अंगार गुड़ा नहीं पकेबा, कार्बन नहीं सब पकेबा, जोर से जलिबो। निया कुहुली कुहुली जलुची, खाली ऑक्सीजन नहीं माने बिंचिबा, ताकू बिंचिबा बा फुंकिबा, ताले ऑक्सीजन गैस हम ताकू पास करबा, ताले से भी निया जोर से जलिबो। ताले कार्बन पकेले जलुची, अंगार पकेले जलुची, ऑक्सीजन पास कले जोर से भी जलुची। किंतु जो निया लगी से जब हम कौन करवा ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कला परे कौन हम? से निया लिभिबो, निया लिभिजिबो। ताले कार्बन डाइऑक्साइड रोल कौन? दैट हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशिंग दैट फायर, माने निया लिभेबारे से साहाय्य करिवो। जोड़ा हम यूज करचे फायर एक्सटिंग्विशर, अग्नि निर्वापक यंत्र रे व्यवहार कराउची जे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निया लिभेबारे साहाय्य करे। तार अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड रे कार्बन अच्छी, ऑक्सीजन भी अच्छी, ताले कार्बन पकेले अंगार पकेले जोर से जलुची, ऑक्सीजन पकेले जोर से जलुची, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड पास कले निया लिभि जाउची। एदु हम कोन कंक्लूजन ड्रा कले? एदु कंक्लूजन या ड्रा कले कार्बन डाइऑक्साइड रे neither the property of that carbon nor the property of that oxygen that is retained, अर्थ यौगिक पदार्थ रे मौलिक गुड़िकर धर्म रुहे नाही, से माने निजस्व धर्म हरई बसंती। दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, दैट इज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड द इंडिविजुअल स्पेसीज, इंडिविजुअल एंटिटी, दे लूज देयर आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी। So this is the definition for that compound. The important property, that is individuals or elements
will lose their property in compound. अर्थात यौगिक पदार्थ रे मौलिक गुड़िक निजस्व धर्म हरेबे. That is very important property. So this is regarding that is compound, and this is very important property. We just can separate them. हमें आउ गोटे एग्जांपल मते नहीं परिबा. मने करा जाऊ आयरन क्लोराइड FeCl3 तुम जानि छ हमें गोटे मैग्नेट आनिमा. मैग्नेट आनले कोन हबो जदि मैं आयरन थिबो तले बुले देला परे मैग्नेट कोन करबो से आयरन गुडा सब टाणी धरी पळे आछो. तले FeCl3 आयरन अछि ना नाही अछि. Fe आयरन अछि किंतु तमे मैग्नेट आनि के फेरी क्लोराइड नै छ से भितर मैग्नेट बुलेले मध्य से आयरन टा टाणी के जाई परियो नाही. काई एटा आयरन टा कोन पेन टाणी के जाई पर आयरन तो अछि एटी हम फार्मूला लिखि छे FeCl3 लिखि छे. तमे FeCl3 फार्मूला लिखि छे किंतु आयरन ता निजस्व धर्म इटे रखी नाही. इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ दैट आयरन दैट हैज लॉस्ट. तेणु एडे जेहेतु आयरन धर्म नाही तेणु एटा काम का कंपाउंड. या परवर्ती जोडा हम पढिबा मिक्सचर कथा सेटा कि रहिबो मु बुझेबी. किंतु वर्तमान एटा देखो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ नाइदर ऑफ दैट आयरन nor of that chlorine that is retained within this FeCl3 and that is produced in the ratio of 1:3. Therefore that is the example of that compound. या ना दियाला कंपाउंड. कौन पाई कंपाउंड देले ना निर्दिष्ट अनुपात रे के मिशन आयरन एंड क्लोरीन इन द रेशियो ऑफ दैट इज 1:3. निर्दिष्ट अनुपात रे जदि FeCl2 नबा आयरन chlorine ratio that will be 1:2. तले it ferry chloride, this is a ferrous chloride. So neither the property of that iron nor the property of that chlorine that is retained. Therefore these are the examples of that compound. Yes, the compounds they can be divided into two kinds. Compounds they can be divided into two kinds, that is organic and inorganic. These compounds that can be divided into two kinds, that is organic and inorganic. जैव अजैव organic and inorganic. तेणु यौगिक पदार्थ को आम पुणी आउे दिभाग व्यक्त करचे गोटे organic compound आउ गोटे inorganic compound. Then how to define that organic compound? Organic compound हम कौन define करिबा. Organic compound that contain covalently bonded carbon atom. Covalently bonded carbon atom except that is carbonates, bicarbonates, etc. There must be the presence of that carbon atom. Without carbon atom there is no such, that is organic compound. And beside them all others are inorganic compounds. HCl, sulfuric acid, H2SO4, ammonia, water, whatever that you will take the examples are the examples of that is inorganic compounds. Organic means there must be the presence of that carbon atom. Carbon atom must be covalently bonded. जो पढ़ीच सह संयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड निहाती थिबो, कार्बन आटम निहाती थिबो एवं से कंपाउंड गुड़िक डायरेक्ट लो बा इनडायरेक्ट लो आम लिविंग सोर्स जो कहे प्लांट हो एनिमल हो एमान पाउथबा तेणु ता ना ऑर्गेनिक आ ताकू छल्ला परे आ जहा रहला से माने इनऑर्गेनिक कंपाउंड जोटा कहे अजैव जैव अजैव जीवरु एटा जात होइथिबो एटा अजैव अजैव पदार्थ जीव नथिबो. तेणु बर्तमान हम डिफाइन कले कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय taking different kind of elements or atoms in a definite ratio, and after the formation of that chemical compound the individuals they lose their identity or properties, and again we have defined or derived, that is classified the compounds two kinds. One is organic, another that is inorganic compound. So organic means that must contain carbon atom and that carbon atom must be covalently bonded.
and inorganic compound that is may or may not contain carbon. For example, sodium carbonate that contain carbon atom, but that is not organic. So except that carbonates, bicarbonates, carbides, these are the organic compounds, inorganic compounds. So next we'll say we have defined that element compound. Next we'll go for that is mixture. Next we'll go for that mixture. Then I have to define that mixture. That is substances produced by taking elements, compounds, elements or compounds in any ratio. So mixture, that is a substance that is produced by taking different kind of elements, different kind of that compounds in any ratio. There is no such specificity in that ratio. एमानक अनुपात निर्दिष्ट नुहे, जेकोसी अनुपात रे हम नबा, मौलिक को मौलिक रे नबा, यौगिक को यौगिक मिसेबा, बा मौलिक को यौगिक सब मिसेबा, तले हम पाइबा कोन मिक्सचर. तले मनाकर एग्जांपल दबा, फॉर एग्जांपल दैट इज द एग्जांपल ऑफ दैट gunpowder that contains gunpowder that contain carbon, sulfur, these are the elements, potassium nitrate, etc. So that contain elements and compound, that is gunpowder, carbon, sulfur, potassium nitrate. We can take that is brass, bronze, so कंसा पितल हम कहूचे सेटा कॉपर टिन, कॉपर जिंक, brass, bronze, जोटा कहते alloy, मिश्र धातु. All the examples of that alloy, copper, tin, copper, zinc, copper, tin, copper, zinc, जो brass, bronze, कंसा पितल, तले alloys, these are the examples. For example, brass, bronze, German silver, that contains the elements copper, nickel, zinc. The name is German silver, but there is no such silver as the germanium. माने German silver ये गोटे alloy मिश्र धातु जोटा कॉपर अच्छे, निकेल अच्छे, जिंक भी अच्छे. किंतु ये German silver ना दे germanium नहीं, किंतु silver भी very important. What is the composition of that German silver? That is copper, nickel and zinc. So all these are the examples. You can take that is air. Air, that is the example of that mixture. That is wine. Wine, that is also that is alcoholic beverages. Wine, जो मद पिउचे से मद रहउची कोना ethyl alcohol और water रहइबो. Compound, air that contains, that is oxygen, carbon dioxide, nitrogen, helium, neon, argon, krypton, xenon, etc. These are the different gaseous material that is present in that air. That is also the example of that mixture. Then wine that contains, that is C2H5OH, ethyl alcohol. Alcoholic beverages that contain ethyl alcohol, along with that there is the presence of that is water. For example, brandy, whiskey, rum. ना सुनते brandy, whiskey, rum एरा सब मद. तेणु से प्रायतः रोचे 40 to 50% ethyl alcohol है, rest part your water. ठीक से बोले हम जब कुछ beer that contain about 7 to 12% that is ethyl alcohol, rest part होची that water. ताले एमाने होचन कोन? एमाने होचन दे chemical compound. तेणु हम कहचे मौलिक को मौलिक सह मिसेबा बा मौलिक सह यौगिक पदार्थ मिसेबा बा यौगिक को यौगिक पदार्थ मिसेबा जेकोन अनुपात रे मिसेबा सेमान को हम कहचे मिक्सचर. किंतु इट वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है कोन ना आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दैट मिक्सचर द इंडिविजुअल्स they do not lose their identity
or the property. They can be separated by the physical means like crystallization, evaporation, boiling, a type of physical method of separation kari pariya. Hand picking or by the help of that magnet, हम से separate kari pariba. कहीं सेमानकर निजस्व धर्म से बजाय रखिबे. They do not lose their identity or property even after the formation of that mixture. Mixture formation ला पर भी मध्य सेमाने सेमानकर निजस्व स्वतंत्र बा जोड़ा को जे इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस सेमिदा रखिबे निजस्व धर्म हरेबे नाही. फॉर एग्जांपल गोटे कंटेनर भितरे मानकर कॉपर आयरन से गोल्ड तीन टाक मिसिक अछि. मु चाहूचे एमान भितर मु आयरन टाको बाहर करिया पई चाहूचे. ताले कोन करिबा गोटे मैग्नेट आनिबा मैग्नेट आनी ता भितर बुलेदा बुलेदा कोन हबो आयरन दैट विल गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ दैट मैग्नेट. जदि आयरन एटा तार निजस्व धर्म हरै बसी थांता ताले कोन होई थांता एटा जदि आयरन तार निजस्व धर्म हरै बसी थांता ताले कोन होई थांता केबे भी मध्य मैग्नेट द्वारा से टाणी ही न थांते. जिंदे या पूर्व एग्जाम ले हम दतले फेरस क्लोराइड बा फेरी क्लोराइड रे मैग्नेट द्वारा से टाणी के आसंती नाही किंतु एटा बर्तन टाणी के आसीबे. ता अर्थ यदि हम कंक्लूजन ड्रा कले मिक्सचर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय टेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ atoms that is elements or different kind of compounds or compounds that of the elements in any ratio that you can take जे कौन से अनुपात हम नहीं परिबा एवं से माने फॉर्मेशन ला परे इंडिविजुअल स्पेसीज जो एटम कहूचे बा कंपाउंड कहूचे से माने निजस्व धर्म हरेबे नाही. दैट इज द मिक्सचर. पुणे मिक्सचर को हमें दिवारी व्यक्त करिबा. वन दैट इज होमोजेनियस, that is another heterogeneous. होमोजेनियस समान भाव बांटी रहे जोटा लास्ट क्लास मत मुझे ब्रीफली डिस्कशन करते समान भाव बांटी रहे हेटेरोजेनियस समान भाव बांटी रहे ना. किंतु एथर में कंक्लूजन ड्रा कले डिफरेंट काइंड कंपाउंड मिसिबे डिफरेंट काइंड एलिमेंट मिसी पारिबे बा एलिमेंट को कंपाउंड मिसिबे जेकोन अनुपात रे मिसिबे एवं ए रासायनिक बर्तमान जो मिश्र पदार्थ हम कहूचे मिक्सचर कहूचे तैयारी होला परे प्रत्येक निजस्व स्वतंत्र धर्म निजस्व धर्म बजाय रखिबे. से माने निजस्व धर्म हरेबे नाही. किंतु जौग्य पदार्थ कोन होतला जौग्य पदार्थ रे से माने निजस्व धर्म हरौतले से मानको हमें सेपरेशन करि परिबा नाही. किंतु एडा मानको सेपरेशन करिया मने करा जाऊ अल्कोहल एंड वाटर एमानको हमें सेपरेशन करिया पई चाहूचे. यदि अल्कोहल वाटर सेपरेशन करिया पई चाहूचे यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट heating. So at first the ethyl alcohol that boils and that get vaporized, that is separated, that is fractional distillation. By the method of fractional distillation this can be separated but not the compound. So this is regarding that is mixture. So we have defined the fundamental aspect that is element, compound and mixture in detail. So in the next class we will see how that compound that is written, what are these acid radicals, basic radicals, what is the meaning of that radical and how the compound of that substance that is written. So in the coming class we will discuss. Thank you all.